Okay, now we will solve the question number 29. Question number 9, exercise 13.8. There are 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and ratio of s and s dash. इस पर एक बेसिक चीज बेटे याद रखना है. If any solid is melted and recast into another solid, then volume of both the solids are equal. I am saying that volume, not surface area. When a solid is melted and recast into another solid, then the volume of both the solids are इक्वल. ध्यान रखिएगा इसको, वॉल्यूम इक्वल होगा अगर एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा. सो बस ये ध्यान रखना है. रिमेनिंग क्वेश्चन इज सिंपल. यहां पर क्या हुआ, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r डैश आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर. 27 स्फीयर थे, उनको पिघला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया. इसका मतलब क्या हुआ, volume of 27 spheres is equal to that big one sphere. Is it okay? बस इतनी ही बेस है. रिमेनिंग क्वेश्चन इजी है. देखो आप, when a solid A is melted and recast into another solid B, then volume of A is equal to volume of B. इतना कंसेप्ट है बेटा. अब चलिए, for 27 solids, volume of one solid is equal to 4 by 3 pi r cube, because one solid की रेडियस कितना दिया है, r. Therefore volume of 27 solids, इसी एरिया वॉल्यूम के मल्टीप्लाइड बाय 27, v1 बोल दिया है. 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 by 3 pi r cube. 3 9 जा 27, 9 4 जा 36 pi r cube. This is the volume of 27 solids. Okay, now for the new solid sphere, रेडियस बेटा इसकी है r डैश. Therefore volume v2 is equal to 4 by 3 pi r dash cube. Number B, since these 27 solids melted and recast in the shape of the new sphere, therefore volume v1 is equal to volume v2. लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v1. मैं अपने कन्वीनियंस से लिख रहा हूं. सो 4/3 पाई r डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई r क्यूब. सो दिस पाई एंड दिस पाई कैंसिल आउट. r dash cube is equal to 36 into r cube, this 3 upside, and this is the 4 9 here. So 4 9 ja, r dash cube is equal to 27 r cube. So r dash cube is equal to 3 r cube. So this implies r dash is equal to 3r. This is the answer first. Therefore radius r dash of the new sphere is equal to 3r. Now we have to find out the ratio between their surface areas. Now s is the surface area of one sphere and s dash is the surface area of the new sphere. So now s upon s dash is equal to, s is the 4 pi r square and s dash is the 4 pi r dash square. This 4 pi and this 4 pi cancel out. So this is equal to r square and r dash is equal to कितना है बेटा, 3r whole square. So this is equal to r square upon 9r square. This r square and this r square is cancel out. So 1. So s upon s dash is equal to 1 upon 9.
that is S ratio S dash is equal to 1:9. This is the result. बस इसका बेटा एक ही मेन पार्ट है. One main part is when a solid or solids melted and recast in the shape of another solid, then the volume of the solids in the both cases are equal. मान लीजिए when a solid A is melted and recast into another solid B, then volume of A is equal to volume of B. Remaining is the solution. Main base part इसका यही है. यही हमने लिया बेटा. 27 सॉलिड में पहले 1 सॉलिड का वॉल्यूम निकाला, देन वॉल्यूम V1 ऑफ 27 सॉलिड्स निकाल लिया. फॉर न्यू सॉलिड के लिए वॉल्यूम V2 निकाल दिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V2 इज इक्वल टू V1 बिकॉज दिस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द शेप ऑफ अनदर, सो V1 इज इक्वल टू V2. सॉल्व करो, R डैश की वैल्यू आ गई. फिर सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, फाइंड द रेशियो ऑफ S एंड S डैश. S अपॉन S डैश निकाल दिया मैंने. 4 pi r square, 4 pi r dash square, 4 pi cancel out. R dash is equal to 3r. So this is the 9r square. This r square and this r square cancel out 1 upon 9. So S upon S dash is equal to 1 upon 9. That is, this implies कर दें. That is S ratio S dash is equal to 1:9. This is the result. And it's all for the day. Good day, children.